Maths Olympiad. I am Shilpa and I'm from ArifinKidz and I'm the director of ArifinKidz. So, bacha, we will start with the Maths Olympiad today. So, basically, see in Maths Olympiad, what we have to cover, we have to cover maths as well as reasoning. So, first in today's video, as it is my first class and it is my first video, first, I will tell you the session plan means how many chapters are there, how we will go about it, how will I cover everything in today's video. I will tell you, and also I will start the first chapter. So, bacha, first let me show you what are the chapters are there. So, already I told you we have to cover maths and also reasoning. Maths already, bacha, you know, and you are doing in a school also. So, same school syllabus is there, little bit differences. I will give you some tricks so you can do the maths calculation fast. So maths means बच्चा it's a full of calculation, बहुत सारा calculations रहेगा. बट बच्चा रीजनिंग स्कूल के सिलेबस में ना रीजनिंग नहीं है, बट ओलंपियाड के एग्जाम में रीजनिंग आएगा. इफ यू विल गो फॉर एरिफिन किड्स ओलंपियाड एग्जाम और सपोज यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम, मैथ्स मतलब मैथ्स भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा. Reasoning is basically, bacha, logic and analysis. Nothing is there in reasoning that you will mug up. Okay. So reasoning मतलब आपका logic रहेगा, analysis रहेगा, थोड़ा common sense रहेगा. And I will say reasoning is one of the interesting subject. You will enjoy each and every chapter of reasoning. So first बच्चा, first start करते हैं हम लोग chapter and session plans से. Let me show you how many chapters are there in maths, how many chapters are there in reasoning, and मैं कैसे cover करूंगी उसका थोड़ा brief idea देती हूँ. Then we'll go for a chapter. So first बच्चा देखते हैं how many chapters are there. So all of you see, this is your chapter plan. So first chapter you can say in reasoning is ranking. Second chapter is pattern. Third chapter is geometrical shapes. Fourth chapter is odd one out. Fifth chapter is analogy. Sixth chapter is grouping. And seventh chapter is fashion understanding. और ये सबको मिला के ना एक लॉजिकल रीजनिंग होता है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन रीजनिंग, दैट द लॉजिकल रीजनिंग. And if you will see the mathematics, आपको जाना सुना लगेगा because all these chapters are there in your school syllabus. Numbers, addition, subtraction, time, that is your clock chapter. Okay. Then calendar, money, length, weight, capacity. So these are bacha all the chapters. And these are my session plan. So what is my plan? Each and every chapter, first I will start with concept. Directly I'm not going with any question. First class है, first video है. Suppose I will start with ranking. तो फर्स्ट मेरा प्लान क्या रहेगा, मैं पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. व्हाट इज रैंकिंग, हाउ द क्वेश्चन विल बी देयर, सारा पैटर्न आपको मैं बताऊंगी. एंड विद द एग्जांपल, वंस यू विल बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. देन जो एग्जाम्स में लास्ट 10 इयर्स या 5 इयर्स से जितना क्वेश्चंस आ रहा है वो सारा क्वेश्चंस मैं कवर करूंगी. देन यू कैन डू द प्रैक्टिस. तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ईच एंड एवरी चैप्टर में आप कंफर्टेबल हो जाओगे. देन वंस आई विल फिनिश ईच एंड एवरी चैप्टर, देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर अ मॉक टेस्ट एनालिसिस. तो इसमें पूरा प्रिपरेशन क्या रहेगा, एक बार आप चैप्टर वाइज पूरा क्लियर हो जाओगे बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे, क्वेश्चंस क्लियर हो जाओगे. उसके बाद जब ये पूरा सारा चैप्टर्स मैथ्स एंड रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा, we can start mock test. Mock test मतलब पूरा pattern. And you know what is the pattern? Pattern you will get 35 questions. 35 questions में क्या होता है, like 30 questions रहता है. Another 5 question is actual section. 30 question in general section, 5 question in actual section. तो जो general section होता है बच्चा, each and every question carries 1 mark. तो आप अगर सही कर रहे हो सारा क्वेश्चंस और आप 30 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपका करेक्ट हो रहा है, सो यू विल गेट 30 मार्क्स. देन एक्चुअल सेक्शन का जो 5 क्वेश्चंस रहता है बच्चा,
each question carries 2 marks. That means in actual section 5 question, it is 10 marks. तो अगर आप पूरा 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चा एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर करेक्ट, देन यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40. एंड टाइम लिमिट कितना रहता है? इट इज 1 hour, दैट आई विल से 60 मिनट्स. तो आपको बच्चा 60 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है. ओके और ये जो क्वेश्चंस रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा. एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसका मतलब आपका मेनली एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे. ओके 4 ऑप्शंस विल बी देयर, जो कि हम कहते हैं ए बी सी डी. तो उसमें ना आंसर होगा, तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर्स रहेगा वो आंसर को टिक करना है. डोंट वरी फॉर दिस. मैं जब आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑप्शन को चूज किया जाता है. एंड विद द क्वेश्चन पेपर ओएमआर सीट रहता है बेटा, और ओएमआर सीट में कैसे सर्कल रहेगा, उसको कैसे डार्कन करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू. तो वन बाय वन एवरीथिंग वी विल क्लियर. सो आपको थोड़ा पेशेंस रख के ईच एंड एवरी मतलब वीडियो मेरा फॉलो करना है, अच्छे से देखना है. आई एम गिविंग यू अ गारंटी दैट आई विल क्लियर योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट. देन पूरा मॉक टेस्ट हम कवर करेंगे. So as it is my first class, let's start with the first, chapter. And I will love to start with, reasoning first. So we will start with ranking chapter today. Okay. So let's start first chapter. Okay. So हम start करते हैं पहले ranking से. So see ranking. Bacha, do you know what is the meaning of ranking? Ranking means, bacha, remember, position. Ranking means बच्चा पोजीशन. पोजीशन क्या होता है? सो पोजीशन बहुत टाइप का पोजीशन हो सकता है. फर्स्ट वी विल गो फॉर फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट पैटर्न. रैंकिंग मतलब यू कैन सी द क्लास रैंक. आप एक क्लास में हो, आपका क्लास का रैंक क्या है, राइट? सपोज आप अभी एक क्लास में हो जिसमें आपका 30 स्टूडेंट्स है. ओके आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और ये 30 स्टूडेंट्स में आपका एक एग्जाम हुआ, राइट? जब एक एग्जाम होता है द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? बच्चा व्हाट इज योर रैंक इन अ क्लास, राइट? तो अभी ये जो 30 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ दिस 30 स्टूडेंट्स व्हाट इज योर रैंक? तो वो एक होता है क्लास का रैंक निकालना. सो दिस इज योर क्लास रैंक और योर पोजीशन इन अ क्लास, राइट? Another thing you see, suppose I will tell you are standing in a row or you are standing in a queue. जब आप क्लास में जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, आपको आपकी टीचर क्या करवाती है? पूरा क्यू में खड़ा करती है, राइट? तो सपोज दिस इज वन रो और वन क्यू. सपोज यू आर हियर, यू आर स्टैंडिंग हियर. ओके तो अभी आपको देखना है, आप जो यहाँ पर खड़े हो या और यू आर सिटिंग हियर और यू आर स्टैंडिंग हियर, तो ये आपका एक पोजीशन है. सो दिस पोजीशन यू नीड टू फाइंड आउट. ये भी एक आपका पोजीशन है, तो आपको निकालना है ये आपका कौन सा पोजीशन है. ओके तो दिस टाइप ऑफ थिंग विल बी देयर. तो आपको रैंकिंग के चैप्टर में आज आपको बताऊंगी हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, पूरा पैटर्न विद द एग्जांपल्स. सो सो लेट्स स्टार्ट कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए फर्स्ट हमें क्या जरूरी है. ओके सो रैंकिंग में पोजीशन जानने के लिए, फर्स्ट कोई भी रैंकिंग और पोजीशन जानने के लिए, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट थिंग वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट, which is left side and which is right side. This is the first thing. So I will tell you, bacha, if you have copy and pen with you, so first draw a line. थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कैसे जानेंगे. देखो दिस इज अ लाइन और सपोज यू आर देयर इन अ रो, दिस इज आल्सो अ लाइन एंड अ रो. सो अभी देखो यहाँ का लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन सा है?
Do not be confused with left side and right side. बच्चा, what you have to do, थोड़ा दिमाग लगाना है. What? Your left side is, that is the left side. Your right side is the right side. So now just you think, which is your right hand? I will, so this is my right hand. So this is right side. So I will say this is right side. And see, bacha, this is my left hand. My left hand means this is left side. तो कभी भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपके सामने ऐसे लाइन में रहेगा, रो में रहेगा. सो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू लुक एट द पेपर एंड आप देखोगे आपका लेफ्ट हैंड कौन से साइड में है. तो आप देखोगे दैट इज द लेफ्ट हैंड, एंड जो राइट साइड में आपका राइट हैंड है, दैट इज द राइट साइड. ओके, सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ लेफ्ट एंड राइट. अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप आराम से सारा क्वेश्चन कर सकते हो. सो नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट लेफ्ट एंड राइट साइड. Now just think, if I will tell you something, count from the left. From the left मतलब आप left से count कर रहे हो बच्चा. So this is left. मैं आपको बोलूंगी यहाँ से count करो. Something you are counting. So आप left से count कर रहे हो. I have given you the arrow mark also. See, you are counting. This is from the left. You can say this is you are counting from the left. अगर आप राइट से कुछ काउंट कर रहे हो, आपको मैं बोल रही हूँ राइट से ये वाला काउंट करो. सो यू आर काउंटिंग इन दिस वे. सो सी, दिस इज द रो. सो दिस इज कॉल्ड बच्चा फ्रॉम द राइट. दिस इज फ्रॉम द राइट. तो अभी आपका जितना कॉन्सेप्ट रहेगा स्टैंडर्ड 1 का, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, अगर इतना क्लियर हो जाओगे, आपको जो प्रैक्टिस करना है ना बच्चा, यही इतना ही प्रैक्टिस करना है. फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट. तो क्या होगा, इजीली ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हो. मैं अभी आपको एग्जांपल्स देके सारा क्वेश्चंस बताऊंगी. ठीक है. सो अभी फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ, दिमाग में रखना, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट साइड, जो राइट हैंड जिस साइड में है दैट इज द राइट साइड. तो अभी बच्चा देखते हैं रैंकिंग का पैटर्न क्या है. वन बाय वन मैं एक एक पैटर्न का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी. उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कशीट पूरा करवाऊंगी. तो क्या होगा, अगर आप 2 क्लासेस प्रॉपर्ली देख रहे हो, रैंकिंग का चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. सो नाउ आई कैन शो यू, यू नो, द क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स थोड़ा देखते हैं. So we can see how the questions are there. See, this is the first, example for your first pattern. The first pattern is, see, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. You can see, alphabets are there. So, इसमें आपको confused नहीं होना है. You can see all are there in a row. Now, what you have to think? You have to first read the question. Which letter is fourth from the left? So now you see which letter is fourth from the left. Already I told you from the left मतलब क्या होता है? You need to count from this side. This is बच्चा from the left. This is from the left. So first see, this is my left hand. So this is left side. And this is right side. Question में ना लिखा नहीं होगा which is the left side and which is right side. So first you need to think which is left, which is right. Then you need to read the question. It is given fourth from the left. तो अभी from the left मतलब आप left से count करोगे. So P is the first letter, second, third, and this is fourth. So your answer is what? S. So answer is F. Suppose I will tell you sixth from the left. Same series is there. If I will tell you sixth from the left, so same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your answer will be sixth from the left. If I will ask you, the answer is U. Okay. But here the question is fourth from the left. So answer is S. So this is your first pattern, dear students. See. Now you see the second pattern, how the question will be there for second pattern. See,
Again, see, one series is there, right? So, you see, which letter is fourth from the right? First, again, what you have to do? You have to write left here, you have to write right here. Then you need to count from the right. Okay. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So what is the answer? Answer is S. So again you see which letter is fourth from the right. So I counted from the right. So this is Y, then X, then T, then S. So again your answer is what? Answer is S. So I will again repeat. This is from the left, from the right. Okay. So ये हो गया आपका सेकेंड पैटर्न. तो वन बाय वन सारा पैटर्न मैं आपको बच्चा शो कर रही हूँ. इसी पैटर्न से ही आपका क्वेश्चंस रहेगा. So now next pattern will go for. See. Then next pattern is if H and P are removed, then which letter is 8 letter from the right hand? Now bacha say, again the series is there and the question is what? The question is which letter is 8 from the right hand? You need to count from the right. So first आपको क्या करना है? First आपको लिखना है ये left है, ये right. Then you see you need to calculate from the right. But before that you see if H and P removed from the letter. So H and P removed from the letter मतलब वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है. तो आपको क्या करना है? H and P को यहाँ से पूरा निकाल देना है. So what you can do? You can cross H and P. Then you need to calculate, right? Or you will count from this Y, C. This is, you need to count from the right. So it is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Now you are not going to count P because P is already removed. So this is 6, then 7. Then you are not going to count H because H is also removed. So it is 8. So your answer is G. Okay. So again I am repeating bacha. If H and P remove, that means you need to remove H also, P also. That means you are not going to count H and not going to count P. Then you will calculate from right. So Y will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And your final answer is what? Final answer is G. So this is one pattern and I will say this is my third pattern I have covered. So अभी next pattern पे बच्चे चलते हैं. Now you see the next pattern is see again same series is there, but what is the question here? If M and S are interchange their position, then which letter is fifth from the left? Now just think M and S are interchange their position. What is the meaning of interchange? Interchange means M will go to S place, S will come to M's place. इसका मतलब क्या है? M जो है ना वो S के प्लेस में चला जाएगा, S जो है M के प्लेस में आ जाएगा. That means M is here. So now S will come here and M will go to S place. तो अभी ये इतना changes हो गया. Now your question is what? The question is which letter is fifth from the left? Fifth from the left means you need to count from left. So अभी देखो अब लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है वो नहीं भूलोगे. अगर वो दिमाग से हट गया बच्चा आंसर गलत हो जाएगा. So it is from the left means you need to count from A. 1, 2, 3, 4 and this is 5. Suppose you will give the answer M. Then what will I say? It is a wrong answer. Why? Because M and S are interchange their position ना बच्चा. अभी M की जगह पे S आ गया है और S की जगह पे M चला गया है, right? तो अभी यहाँ पर कौन है? M है, but M की जगह पे आ कौन गया है? S. तो आंसर is S.
If I will ask you the question, same type of question, suppose which letter is fourth from the right? If I will ask you which letter is fourth from the right, the same thing, bacha. If same condition is same, M and S are interchange their position, then which letter is fourth from the right? तो अभी आप राइट से काउंट करोगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. नाउ सी दिस इज S इज देयर ना, बट S की जगह पे अभी कौन आ गया है? M. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा M, बिकॉज M एंड S आर इंटरचेंज देयर पोजीशन. ये हो गया बच्चा फोर्थ पैटर्न. देखो कितना फास्ट जा रहा है. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट ऑल दिस फोर्थ पैटर्न. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट पैटर्न आई टोल्ड यू from the left. Second pattern from the right. Third pattern removed related question. Fourth pattern interchange related question. Got it? Now थोड़ा चलते हैं fifth pattern पे. Okay. Now you see. अभी एक interesting question आ गया आपके सामने. Now you see the question it is given. The question is the penguin that is in the first position is. Now you see some are there in a series. The penguins are there. The question is the penguin that is in the first position is. अभी आप क्या आंसर दोगे? आई नो जितने स्टूडेंट्स अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी आंसर दिमाग से क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा जे. राइट? यस, यू आर टेलिंग जे. Okay, but I will say, bacha, this is not a correct answer. This is a wrong answer. Now, your question is why? Why it is a wrong answer? तो अभी थोड़ा देखते हैं why it is a wrong answer. See, bacha, here it is given finish. Here this side the finish is written. तो ये जो finish is written means it is a race related question. तो रेस रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है बच्चा? लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, चलो मैं थोड़ा अपने स्क्रीन पे जाती हूँ और आपको समझाती हूँ. लुक एट हियर. सी बच्चा, स्कूल में कभी रन रेस हुआ है? स्पोर्ट्स होता है, राइट? अभी थोड़े दिन पहले आपके स्कूल में स्पोर्ट्स भी हुआ होगा. सो आप जब रन रेस में पार्टिसिपेट करते हो, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स, लुक एट हियर बच्चा, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. ऐसा आप इस तरफ खड़े हो. अभी आपका इस तरफ एक फिनिशिंग लाइन लिखा होता है ना, राइट? ये आपका फिनिश. तो अभी फिनिशिंग लाइन इज देयर. तो अभी देखो आप यहां से आपको रन करना है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल रन फास्ट. व्हाट इज द रूल? जो बच्चा जाके ये वाला फिनिश लाइन को पहले टच करेगा, ही और सी विल बी द विनर और इन अ फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद जो जाएगा वो सेकंड, देन थर्ड में जाएगा वो थर्ड. तो अभी आप खुद से देखो, यहाँ पर टीचर है. टीचर ने अभी आपको कहा गेट सेट गो. अभी क्या करोगे आप लोग? फास्ट. रन 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 एंड फास्ट. तो अभी देखो सबके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया रनिंग का. सो मान लो जो सबसे पहले यहाँ आके पहुंच जाएगा, ही और सी विल बी द विनर और इन द फर्स्ट पोजीशन, राइट? तो अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अभी यहाँ भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चा पता है? पेंगुइन लोगों के बीच में रन रेस हो रहा है, राइट? नाउ सी ऑल द पेंगुइन. ओके, ऑल द पेंगुइन अभी रनिंग रेस हो रहा है. और अभी देखो, नाउ यू कैन वेरी वेल गिव मी द आंसर हु कैन रीच द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट. दैट इज टी इज वेरी क्लोजर टू द फिनिशिंग लाइन. तो अभी सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को टच कौन करेगा? दैट इज टी. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टी. तो टी इज देयर इन नाउ फर्स्ट पोजीशन. अभी ये होगा सेकंड पोजीशन पे एम. देन ई इज देयर इन द थर्ड पोजीशन. S is there in the fourth position. J, I will say, is there in the last position. So now the answer is T. So always remember, bacha, when you are getting this type of question, that is finish line, always आप आंसर लोगे जो कि finish line के पास रहेगा. Some more example related to this question. Suppose instead of finishing line, I will say this is the ticket counter here. See, bacha. Ticket counter means any kind of ticket counter, or suppose you are going for a movie.
and all of you are standing in a queue. See, all are standing in a queue to collect the ticket. तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगा? This person ना, because he or she is very close to the ticket counter. तो इन लोग को पहले टिकट मिल जाएगा. Another thing you see, suppose same thing, it is there the ice cream counter. And yes, ice cream. अभी आप लोग ice cream counter के पास आप ऐसे खड़े हो. So सबसे पहले आइसक्रीम किसको मिलेगा? जो आइसक्रीम काउंटर के पास पूरा होगा. ओके, सो ये होगा फर्स्ट पोजीशन. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, एंड इसमें आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे और गलती से भी जे आंसर नहीं करोगे बच्चा, अदरवाइज इट विल बी अ रॉन्ग आंसर. आप आंसर करोगे टी तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क, राइट? देन यू सी अनदर पैटर्न. अभी देखो और क्या टाइप का क्वेश्चन होगा. सेम थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. से अभी देखो यहाँ पर अगेन सेम थिंग इज देयर. ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. यहाँ पर इस तरफ प्रिंसिपल रूम है एंड ऑल आर स्टैंडिंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज डैश इज स्टैंडिंग इन लास्ट इन क्यू. सो अभी देखो सबसे लास्ट में कौन है? इफ यू विल से दिस इज अशीमा. असीमा पूरा क्लोज टू द प्रिंसिपल रूम है, तो अभी वो सबसे फर्स्ट में जाएंगे, राइट? बट हु इज देयर इन द लास्ट इन द क्यू? दैट इज नक्स. तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है? दिस इज नक्स. तो अभी सपोज प्रिंसिपल और समथिंग ऑफिस इज रिटन हियर, तो you need to see किस तरफ खड़े हैं, right? But when it is finish line related question, ice cream related question or ticket counter any, and it is written this side, suppose आपको देखना है कौन closer है. Accordingly you have to give the answer. Here Nux is in the last position and Ashima is in the first position. So बच्चा, this is your sixth pattern. So again I will tell you what I have covered. It is the pattern of your ranking, and this much is for standard 1 and you need to do the practice. So brief idea again I am giving you bacha. Always you should be very clear about left and right. This is left side, this is right side. How this is left side, this is right side? My left hand, my right hand. Okay, then from the left, from the right. Okay, so first pattern I told you how to calculate from the left. Second pattern I told you how to calculate from the right. Then in third pattern I told you removed related question. Then fourth pattern I told you what? Interchange related question. Fifth pattern I told you race related question. And you see in sixth pattern, suppose office or principal office is there, anything is there, or you are standing in a queue, then how you will go for your position. Okay, so I hope all of you are clear about the complete concept. So bacha, in next video I will show you the worksheet, how to solve the question. And in worksheet, I will give you 4 options, that is A, B, C, D. Then I will tell you how to solve the question, how to mark the option, and bacha, mark the option not in a question. You need to darken the circle, and that circle will be there in OMR sheet. So I will show you how the OMR sheet is also there, right? So how you will darken the circle, everything I will tell you in my next video. And I hope you like this video, and definitely you will come to my next video. Thank you so much. Bye-bye.